हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल के डब्ल्यू ट्रेड टॉक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स जहां पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं एंड प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट हैं अबाउट द कंपनी ग्रोथ एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली इन द स्टॉक प्राइस। सो हमारी फर्स्ट कंपनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। राइट, यू कैन सी इन द स्क्रीन। राइट, ये कंपनी एक लीडिंग इंटीग्रेटेड टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हैंडल करती है। लेट्स सी द पीपीटी फाइल्स, राइट, जो कंपनी ने अपने एनएसई की साइट्स पे अपलोड करी है। कंपनी के पास लगभग 25 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट, for this logistic department. It's maintain the temperature variation from minus 25 degrees Celsius to the 25 degrees Celsius, right? So ये different types of the products, right, which company own it for the logistic department. और ये logistic company 2024 में 3 अवार्ड से भी सम्मानित की गई है, right, which is very good. कंपनी पूरी पैन इंडिया में वर्क करती है and company is having almost 45 warehouses, right, across 20 cities. कंपनी के पास 13 customer industries हैं, right, and 840 plus customers company is currently handling, and these are the different industries which company taking care at the moment. Meat, poultry, right, dairy departments and pharma, healthcare, right, even the e-commerce also, right. So these are the different industry sectors which company is providing the logistic deep services. और ये कुछ कंपनी के expansion plans कलकत्ता और लखनऊ, and कंपनी के पास एक dedicated infra भी है for the pharma and the e-commerce department, right. एक बारी कंपनी के financials के ऊपर नजर मार लेते हैं। ये एक small cap कंपनी है and you can see, right, from the 2021 कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट पोस्ट कर रही है ऑन ईयरली बेसिस एंड सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। सो फ्रॉम 2023, राइट, सो कम प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट अपनी 6% होल्डिंग इंक्रीज करी है, विच इज वेरी गुड इन कंपनी फेवर। एंड इफ यू सी हियर, कंपनी के प्रमोटर्स ने अभी जून मंथ में, राइट, अप्रोक्सीमेट 1300 और अप्रोक्सीमेट 1400 लाख्स की परचेजिंग करी है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड एफआईआईस ने भी धीमे धीमे अपना इंटरेस्ट शो किया एंड डीआईज ऑल्सो shows their interest, right, in company. एक बार कंपनी के वीकली चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं। ये कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया था, राइट, लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस कंपनी स्टार्टेड मूविंग साइडवेज एंड देन इट स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट एट द मोमेंट, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, कंपनी 2015 से ही एक डाउनफॉल के अंदर थी एंड देन सिंस 2019, राइट, कंपनी स्टार्टेड मूविंग साइडवेज एंड इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड मूवमेंट, राइट। सो लाइक दिस, ये कंपनी का सपोर्ट लाइन था यहाँ पर, and this one was the first resistance line which company was facing at the moment, right. And if you see the next resistance of this company, this would be the next resistance of this stock, right, at the moment, which is 92 rupees. और हम current price से इसके next upcoming resistance की देखें तो that's a potential gain of almost 15% at the moment, and we hope it will form a very nice rounding bottom pattern like this and it will touch its lifetime price again. Let's see, the lifetime high price of this company was around 117 rupees, right. If we see the movement of stock, right, from the current price to the lifetime high, it's a nice potential gain of the 46%. ये company, right, for example, after touching its lifetime high, it may form again a handle pattern here, right, like this, and it would be a very nice cup with handle pattern. Second stock है पैसा लो डिजिटल लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी कंपनी है, राइट, जो लोन प्रोवाइड करती है फॉर द स्मॉल स्टेक होल्डर्स, लाइक जो रिक्शा ओनर्स हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, टू व्हीलर्स हैं, टेम्पोस, राइट, फॉर दीज स्मॉल स्टेक दे आर प्रोवाइडिंग अ लोन्स टू देम। कंपनी के आरओसी एंड आरओई वैल्यूज आर वेरी गुड और कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, राइट, फ्रॉम द लास्ट few years, right, it keeps on increasing, which is very good, and company is posting a higher ever result of 179 crores, right, in financial year 2024. और कंपनी का EPS भी gradually increase कर रहा है with increase in profits. And if you see here, from the March 2021 से लगातार promoters stake increase कर रहे हैं in this organization. It increased from 43 to 51 at the moment in the Feb and June, right. The promoters had bought a very heavy quantity, right, 5,000 lakhs plus, right. So it's good in company favor. एक बार कंपनी के चार्ट के ऊपर नजर मार लेते हैं। कंपनी ने रिसेंट अभी 96 रुपीज का एक हाई मारा था एंड सिंस देन स्टॉक हैज बीन करेक्टेड अ लॉट और अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है एंड स्टॉक इट स्टार्टेड मूविंग इन अ रेंज एट द मोमेंट, राइट। और इसके करंट प्राइस से यदि स्टॉक की मूवमेंट देखें फॉर द लास्ट हाई, इट वुड बी अ गेन ऑफ अप्रोक्सीमेट 46%, राइट। लिस्ट में थर्ड कंपनी है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, राइट, एंड कंपनी पी इज वेल बिलो द इंडस्ट्री पी, विच इज 34.5 एट द मोमेंट एंड इंडस्ट्री पी इज 55.3. ROC एंड ROE के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं इफ यू सी इन द स्क्रीन। कंपनी स्विच गियर्स, वायर केबल्स और एनर्जी
मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर अभी काम करती है। लेट्स सी द इन्वेस्टर्स सेक्शन, जहां पर प्रमोटर ने मार्च 2022 से लेकर एंड जून 2024 तक लगभग अपनी 5% की स्टेक कंपनी में इंक्रीज करी है, राइट, विच इज गुड फॉर द कंपनी फेवर। एक बार कंपनी के चार्ट के ऊपर नजर मारते हैं। कंपनी का स्टॉक जून मंथ से राइट इन दिस रेंज इज शोइंग अ गुड एग्रीगेशन एट द मोमेंट। इफ यू सी द लास्ट रेजिस्टेंस हियर, राइट, और कंपनी एक बहुत ही अच्छा नाइस का विद हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है एट द मोमेंट, राइट, लाइक दिस, एंड these are the small handles of this stock. If you take the depth of this cup, put it on the resistance value, showing a almost gain of 25% at the moment, right, and which is a value of approximate 20-21% right from the current price. ये हमारे 3 स्टॉक्स थे जहां पर promoters are very confident for the company growth और लगातार अपनी स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, right. So let's see how the stocks and the company behave further, right. Please keep these stocks under your watch. Keep a note, right. This is not a recommendations to buy or sell. Keep watching, keep supporting. Thank you once again.